So last time, today we are going to discuss vestigial sideband transmission, and look at vestigial sideband transmission. And last time we discussed single sideband suppressed carrier. So let us again quickly go through the advantage and disadvantage of single sideband suppressed carrier over double sideband full carrier. Here less bandwidth is required. This is FM, but in case of DSVFC, it was 2 FM. Okay, so it means if less bandwidth, it means the rest of the frequency can be used for other purposes. Okay, then lots of power can be saved because this is due to the transmission of only one sideband component. So if we go for 100% modulation, we can save at least 83.33% power. And of course here reduced interference of noise. This is due to the reduced bandwidth because bandwidth is only FM. So because of less bandwidth, less chances of interference of noise. That is why. So as the bandwidth increases, the amount of noise added to the signal will also increase. So double sideband full carrier, their noise is much as compared to single sideband. But disadvantages are also there. Generation and reception of SSB signal is quite complicated. And transmitter and receiver need excellent frequency stability. And slight change in frequency will hamper the quality of the transmitted and received signal. So hence SSB single sideband therefore is not generally used for transmission of good quality music. Rather it can be used for speech, right? Because in music we need a good quality. So he said major disadvantage is what, that this particular SSB transmitter receiver, they need excellent frequency stability, and if there is any change in frequency, it will hamper the quality of the transmitted and received signal. So that is why. Okay, and look at the transmission bandwidth of single sideband suppressed carrier. So this is FM, half of the single sideband, double sideband full carrier, and half of the double sideband suppressed carrier modulated waves. So application here, this can be because of the power saving and low bandwidth. Here, where in all those applications where low bandwidth and low power is required. So application areas are land and air mobile, communication, telemetry, military communication, national navigation, amateur radio. So many applications are point to point. So this is what I reviewed the single sideband suppressed carrier, its advantage, disadvantage, and applications. So let us now how we can save the power. 83.3% by keeping m is equal to 1. If we are keeping m is equal to 0.5, then add means 50% modulation. Even more power can be saved. Look at 94.44%. So this much power can be saved in case of single sideband suppressed carrier. Now what is vestige? Vestigial sideband transmission. This is another type of amplitude modulated modulation system. This particular vestige means some part of what I will let you know over. So look at in case of a single sideband, there are stringent frequency response requirements on the sideband filter in a single sideband suppressed carrier system that can be relaxed by allowing a part of unwanted sideband called vestige to appear in the output of the modulator. Let me tell you. See, in case of single sideband suppressed carrier, there we have to we need a filter which can suppress one sideband, either lower or upper. Then frequency response requirement is stringent in case of SSB SC. So, but in case of VSB, vestigial sideband transmission, we can transmit one full sideband and some part of the lower sideband. Okay, so this way some relaxation on the SSB. Okay, so due to this, design of the sideband filter is simplified to a greater extent, and bandwidth of the system is increased little bit slightly because we have taken full sideband as well as some part of the other sideband. So we have not taken two sidebands simultaneously, but one full sideband and another some part. So this some part means vestige means some part. Okay, this is how we can generate vestigial sideband modulated signal. Okay,
How? Here again, information contained by modulated signal, which is carried by the carrier, and both are given to the balance modulator. Both are acting as input. So balance modulator will act as a product modulator, which will generate a double sideband suppressed carrier. Here carrier will be suppressed, but two bands are there. But we need what? We need one sideband and some part of the other side. So sideband filter is applied over here, which will produce one complete sideband along with some part of the other sideband, and that signal is called VSV signal. Then of course it has to, with the use of linear amplifier, chain of linear amplifiers, this signal will be amplified, and before transmission its power will be increased with the help of power amplifiers. Gurcharan Bhardwaj, look at, right? So VSV signal obtained at the output of the filter is applied to the chain of the linear amplifiers. Then it can be raised in power by the power amplifier. Then amplified signal is then applied to the transmitting antenna for onward transmission of the signal, right? Now look at the frequency domain description of VSV signal. VSV is nothing. This is vestigial sideband. Now this is the spectrum of the message signal. Fine. Look at its bandwidth and look at the VSV signal. Look at spectrum of the VSV signal. Look at full part of USB and some part of the lower LSB. USB means upper sideband and some part of the lower sideband. Look at its frequency range. And similarly, in case of here, this is a full part of the LSB and some part of the other sideband. Okay, so this way we can generate vestigial sideband. So in the frequency spectrum, it is assumed that upper sideband is transmitted as it is, and some part of the lower sideband is modified into vestigial sideband. Okay, पंजाबी च दसदा ना एक साइडबैंड फुल ते दूजे दा थोड़ा जिहा हिस्सा असीं नाल भेज दईदा ते तां दूजे दा थोड़े जिहे हिस्से नूं बोलदे असीं वेस्टिजियल साइडबैंड. पता लग गया? इस तरीके नाल असीं भेजदे हां. सो इहदी बैंडविड्थ जिहड़ी आ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ W plus FV hertz. So this is the bandwidth of the vestigial sideband. Here W is the message bandwidth which contains the information, and FV is the bandwidth of the vestigial sideband. What are its advantages? The main advantage of VSV modulation is the reduction in bandwidth as compared to double side full carrier. Gurcharan Bhardwaj, others, please look at. Okay. So in case of VSV modulation, what is the major advantage? Advantage is the reduction in bandwidth. So it is almost as efficient as SSV. As in case of SSV, low power and low bandwidth is required. So this is almost as efficient as SSV. Now due to the allowance of transmitting a part of lower sideband, one full and some part of the lower sideband, then constraint on the filters, I mean restrictions on the filters have been relaxed. Okay, so practically bete noise aa rahi piche, so practically easy to design filters can be used. Okay, थोड़ी जियां restrictions या constraint filters तो हट गई, वो थोड़ा जिहा रिलैक्स हो गया, इस करके फिल्टर ਨੂੰ डिजाइन करना ईजी है vestigial sideband वास्ते. Then it possesses good phase characteristics and makes the transmission of low frequency components possible. Due to its good phase characteristics, it can transmit the low frequency components as well, right? What are the application? Major application is of this VSV modulation has become standard. Rather, it becomes the standard for transmission of television signal. So in television, while the transmission of television signal, VSV modulation has become a standard. So because the video signals need a, because while in TV transmission we need a picture signal, we need a video signal and other signals that you will study in higher classes. Video signal needs a large bandwidth. Okay, and if we transmit it using double sideband full carrier and double sideband suppressed carrier. So here in these two modulation systems, it needs a large bandwidth, but in case of VSV, less bandwidth is also required. That can be meant for transmission of television signal. No noise.
Now, how we can generate VSB modulator wave? Look at, I already told you, this modulated signal which contains information, carrier oscillator is generating carrier frequency which is carrying this information, and how both the signals are uh, being here, both are multiplied with the help of a product modulator. So product modulator will multiply these two, and this output of the product modulator will be given to the sideband filter, which will produce a one full sideband and some part of the other sideband, and that signal will become a VSB signal, right? So how this can be? Look at now, this xt is a modulated signal, ct is a carrier signal, both are multiplied with the product modulator. So xt is a modulating signal and this ct is a carrier signal. Ct is a carrier signal, and this can be mathematically expressed as ec cos omega 2 pi fct, okay, or you can say cos 2 pi fct, right? Here ec is the amplitude of the carrier and fc is the frequency of the carrier signal. So this way, this is becoming double sideband suppressed carrier modulated wave. But we want only vestigial sideband, so one full sideband and some part of the other sideband. So then this signal is then applied to the sideband shaping filter. Here it is giving a shape of a double side. Here we are getting full double sideband, but with the suppressed carrier. But we are not getting vestigial sideband. So for getting vestigial sideband, we have to give it to the sideband shaping filter. The design of this filter depends on the desired spectrum of the VSB modulated signal. Now filter we have to design as per the requirement of the VSC modulated signal, VSB modulated signal, vestigial sideband. So this filter will pass the wanted signal as it is, means one एक पूरा ही पास कर देना, and vestige of the unwanted ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ vestige means some part, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ it will become a vestigial sideband. So ਆਹ part ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ mathematics. So this is how we can generate a vestigial sideband modulated signal. ਹੁਣ ਇਹਦਾ advantage ਕੀ ਆ? Here reduced bandwidth as compared to double sideband full carrier, right? So practical filters can be used due to partial suppression of LSB. क्योंकि ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਾਈਡਬੈਂਡ ਭੇਜਣਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡਬੈਂਡ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਭੇਜਣਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫਿਲਟਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਉਹਦਾ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡਬੈਂਡ ਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਡਬੈਂਡ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਦੱਸਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? Different types of amplitude modulations are listed below. Look at double sideband full carrier. This is amplitude modulated wave. ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ medium wave ਵਿੱਚ ਵੀ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ standard ਹੈ we are calling it as A3E. Double sideband full carrier we are calling it as A3E. Then single sideband reduced carrier. Reduced means carrier is not much, but it is reduced or it is attenuated. It is not full, it is reduced here. So this is also termed as R3E. This is single sideband reduced carrier. This is and we are sometimes we are calling it as a pilot carrier system. So here we have to attenuate the carrier. So this attenuated carrier is again reinserted into the SSB signal. This facilitates the receiver tuning and demodulation. पता लग गया? फिर अगले पासे आगा इतने तो सिंगल साइडबैंड रिड्यूस कैरियर सी, जिन्हें ਅਸੀਂ R3E कहने हैं, कैरियर ਨੂੰ थोड़ा अटेनुएट कर लेके रीइंसर्ट करते सी। बट हेयर इन थर्ड केस इतने सिंगल साइडबैंड फुल कैरियर है। लुक एट रिड्यूस्ड कैरियर, फुल कैरियर एंड सप्रेस्ड कैरियर। इतने थोड़ा जिहा कैरियर घटाता, इतने पूरा करता, इतने पूरा ही दबता। तो जिथे पूरा रखा सिंगल साइडबैंड फुल कैरियर वी आर कॉलिंग इट एज H3E. This is single sideband full carrier. This could be used as a compatible and broadcasting system with AM receivers. So this gives a very low percentage of distortion. जितना अपन डबल साइडबैंड फुल कैरियर ਵਿੱਚ यूज करते हैं और ब्रॉडकास्टिंग वास्ते AM रिसीवर ਲਈ यूज करते हैं, this can be used over there. So it is this gives a very low percentage of distortion. Then single sideband suppressed carrier, ये carrier पूरी तरह suppress करता, we are calling it as J3E.
एक सिस्टम का नाम है। सो इतने कैरियर पूरी तरह सप्रेस करता, दी कैरियर सप्रेस्ड बाई एट लीस्ट 45 dB, 45 dB नाल, ठीक है। उत्ते उत्ते 16 तो लैके 26 dB नाल सी, इतने 45 dB नाल असीं उहनूं रिड्यूस कर देने आ इन दी ट्रांसमिटर। नाउ इट इज स्लोली रिप्लेसिंग AM A3E कम्युनिकेशन। सो जे असीं सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर कर दिए इस तरीके नाल उहदे कैरियर नूं सप्रेस कर दिए बाई 45 dB, तो ये पहले की जगह लै सकता है जी AM A3E सिस्टम, पता लग रहा। दैन अगे है इंडिपेंडेंट साइड बैंड सिस्टम। इतने देखो पहले डबल साइड बैंड या फुल कैरियर या डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर में दोनों जो साइड बैंड से उन्होंने इनफॉर्मेशन सेम सी, एक दूजे के इमेज से, पर इतने इंडिपेंडेंट साइड बैंड तो दो होंगे पर वो एक दूजे के इमेज नहीं होंगे। सो इसमें असीं बोलते BAT, टू इंडिपेंडेंट वर्ड इंडिपेंडेंट डिपेंड्स इट सेल्फ, कि दोनों साइड बैंड इंडिपेंडेंट है, वो एक दूजे के डिपेंडेंट नहीं है, एक दूजे के इमेज नहीं। टू साइड बैंड टू इंडिपेंडेंट साइड बैंड विद कैरियर सप्रेस्ड, तो इतने कैरियर थोड़ा रिड्यूस कर दिता या सप्रेस कर दिता। दैन वेस्टिजियल साइड बैंड वी हैव जस्ट स्टडीड, this is called as C3F. This system is used for TV transmission. जिथे vestige means some part in place of the unwanted sideband is transmitted usually with full carrier, right? अच्छा असी SSB कहता why SSB is not used for broadcasting, इहदे कारण की look at we have seen that there are so many advantages of SSB system। किमें कादे ऊपर हैज़ ओवर दी डबल साइड बैंड फुल कैरियर। देखो ये एक तो बैंड विड्थ बहुत घट है, एक पावर बहुत घट यूज़ करता, तो डबल साइड बैंड की बैंड विड्थ तो डबल है और पावर भी ज़्यादा। तो बट SSB स्टिल इज नॉट इन वाइडली यूज्ड इन दी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एप्लीकेशन। आप कारण देखते हैं क्यों नहीं असीं इहनूं रेडियो एप्लीकेशन में यूज़ करते। लुक एट SSB ट्रांसमिटर एंड रिसीवर रिक्वायर्स एन एक्सलेंट फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। देखो ट्रांसमिटर ते रिसीवर में फ्रीक्वेंसी की स्टेबिलिटी बहुत चाहिए। माड़ा जा भी फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट आया, सिस्टम ने जो रिजल्ट है वो डिग्रेड हो जाना और वो क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिट सिग्नल की जी पुअर हो जानी है। सो दिस दस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रांसमिट ए गुड क्वालिटी म्यूजिक यूजिंग दी SSB सिस्टम। पता लग गया वाई? बिकॉज एनी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट इन द सिस्टम कैन रिजल्ट इन दी डिग्रेडेशन इन दी क्वालिटी ऑफ द ट्रांसमिटर सिग्नल। सो चलो वो स्पीच स्टूज वास्ते अच्छा रहा, पर गुड क्वालिटी ऑफ म्यूजिक में ट्रांसमिट करने वास्ते ये सिस्टम सूटेबल नहीं है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए ट्यूनेबल रिसीवर ऑसिलेटर। हाँ भी प्रॉब्लम है कि ट्यूनेबल रिसीवर ऑसिलेटर डिज़ाइन करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, बेशक विद वेरी हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। बेशक हम एडवांस फ्रीक्वेंसी सैंथिसाइजर आ गया जिहदे नाल पॉसिबल बनाया तो जा सकता, पर एक कॉस्टली बहुत है। पता लग गया? सो ये दो तीन रीजन है जिथे जिस करके असी SSB इज नॉट जनरली यूज्ड इन दी ब्रॉडकास्टिंग एप्लीकेशन। समवेयर वी आर यूजिंग इवन फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर्स आर अप्लाइड ओवर देयर, ठीक है। पता लग गया? अगे अगर पायलट कैरियर SSB सिस्टम, पायलट कैरियर मैं पहले दसता असी इतने कैरियर नूं रिड्यूस कर देने, थोड़ा जिहा घटा देने हैगा सिंगल साइड बैंड ही है भी। लुक एट दिस इज ए सिंगल साइड बैंड बट वी आर रिड्यूसिंग दी कैरियर। सो आ देखो SSB system with carrier is not completely suppressed. Instead, a pilot carrier is transmitted along with wanted sideband. असी सिंगल साइड बैंड के नाल जिहड़ा चाहे अपर भेजिए चाहे लोअर भेजिए, पूरा कैरियर ना भेज के असी उन्होंने थोड़ा घटा देने, ठीक है। सो पायलट कैरियर इज एडेड टू द SSB signal which is to be transmitted. This reinsertion of the carrier takes place after the unwanted sideband has been removed. देखो गल ये आ कि असी भेजना तो एको ही साइड बैंड है क्योंकि सिंगल है, एक साइड बैंड को रिमूव करके असी फिर जो कैरियर में रिड्यूस करके असी वो इंसर्ट कर देने। तो कैरियर में रिड्यूस करना जब 16 तो लैके 26 dB तक असी रिड्यूस कर देने। पता लग गया? मैं तुहानूं इहदी ब्लॉक डायग्राम दिखाना। लुक है आ देखो, लुक है। तो ब्लॉक डायग्राम सिंगल साइड बैंड रिड्यूस कैरियर। Look again, this is modulated signal which is containing information. This is a carrier signal. Look at it is given 100% to the SSB modulator as it is, but जब असी एडर नूं दिंदे असी 26 dB नूं घटा के दिंदे हैं, मतलब 26 dB कैरियर नूं असी अटैनुएट करके घटा के एडर नूं दिंदे। पर इत्थे SSB मॉड्यूलेटर की करदा? ये प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का काम करदा, प्लेइंग ए रोल ऑफ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर।
ਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਸਿਗਨਲਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਟ ਵਿਲ ਜਨਰੇਟ ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਸਿਗਨਲ। ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਡਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਰ ਦੀ ਇਨਪੁਟ SSB ਹੋ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਰਿਡਿਊਸਡ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਇਨਸਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਿਗਨਲ ਬਣਨਾ ਐਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਿਗਨਲ ਬਣਨਾ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਡਮੈਂਟ ਰਿਡਿਊਸਡ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ ਬਣਨਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? हेलो, हाँ बच्चों, ब्लॉक डायग्राम क्लियर हो गई? यस सर। हाँ, इट इज क्लियर। यस सर। ठीक है, यस सो सर। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਪਤਾ। तो ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਡਮੈਂਟ ਰਿਡਿਊਸਡ ਕੈਰੀਅਰ ਅਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਇਲਟ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਕੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਵੈਸਟੀਜੀਅਲ ਸਾਈਡਬੈਂਡ, ठीक है, पायलट कैरियर SSB सिस्टम, और फिर डिफरेंट मॉड्यूलेशन सिस्टम SSB की एक्सटेंशन डिस्कस की है, और उस तो बाद ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ BSB ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ब्रॉडकास्टिंग। ਹਾਂ, ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ SSB ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BSB ਦੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਫਿਲਟਰ ਦੇ, ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੇ, ਸਿੰਗਲ SSB ਜਿਹੜੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮ ਪਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ BSB ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੈਸਟੀਜੀਅਲ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਵਧਾ ਕੇ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਥਰੂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡੋਮੇਨ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ, ਵਨ ਪੂਰਾ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਤੇ ਕੁਛ ਦੂਜੇ ਦਾ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟੀਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ BSB ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਫਿਲਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਦੇਗਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਥਮੈਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ, ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹ ਡਬਲ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਸਪ੍ਰੈਸਡ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਵਾਂਟਡ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। SSB ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਇਲਟ ਕੈਰੀਅਰ SSB ਰਿਡਿਊਸ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ 26 dB ਨਾਲ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਇਨਸਰਟ ਕਰਕੇ SSB ਰਿਡਿਊਸ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਆਲ ਦ ਥਿੰਗਸ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ, ਰਾਈਟ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ? हेलो, यस यस सर। ਲੈਕਚਰ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਨੋਇਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਆਰੀ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, शाबाश। कोई इज देयर एनी क्वेरी, इज देयर एनी क्वेश्चन, इज देयर एनी डाउट ऑन योर पार्ट? अगर इफ यू वांट टू आस्क मी आई कैन, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप इंडिपेंडेंट साइड बैंड के नाल मिलांगे, ठीक है बच्चों। इंडिपेंडेंट साइड बैंड सिस्टम एक AM दी लास्ट टाइप है। अब तक आप 4 डिस्कस कर चुके हैं। डबल साइड बैंड फुल कैरियर, सिंगल साइड बैंड sorry double sideband suppressed carrier, then single sideband suppressed carrier, then vestigial sideband, now last area वो independent sideband हुई। पता लग गया? So I hope you enjoyed the lecture. Yes sir, yes sir। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਖੋਲ ਕੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਗੁੱਡ ਡੇ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਮੈਂ ਸਟਾਪ लगाऊंगा। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और अटेंडेंस नोट कर ला नहीं भूल के। नैंसी जुड़ गई बाद लेट जुड़ी है, फिर इशार रतन भी लेट जुड़े। सो अपनी वीडियो ऑन करो भाई, वीडियो ऑन कर लो सारे जाने, वीडियो ऑन करो एवरीबॉडी, वीडियो ऑन करो। अजय कुमार, नैंसी यू ज्वाइंड वेरी लेट, आई डिसलाइक दिस थिंग। सॉरी सर। हाँ, just get a screenshot,
ले लो। ठीक है, ओके, गुड लक, बेस्ट विशेस। ओके सर।